Probability exercise 15.1 question number 22, and the question number 22 is 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. First part, write down all the possible outcomes and complete the following table. Second part, a student argues that there are 11 possible outcomes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1 upon 11. Do you agree with this argument? Solution of question number 22 first part. Given किया गया 2 dice. One of that blue, another is grey. So, table complete करनी है. Table complete करने के लिए हमारे पास condition given की गई even sum of 2 dice. So, favorable outcome find out कर लेंगे. Favorable outcome find out करने के लिए first of all, to get the sum as 2. पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 1,1. इट मीन्स ब्लू डाइस पर कितना आएगा 1 और ग्रे डाइस पर भी कितना आना चाहिए 1. देन द सम इज इक्वल टू 2. एंड नाउ टू गेट द सम एज 3 पॉसिबल आउटकम 2,1 एंड 1,2. इट मीन्स ब्लू डाइस पर कितना आना चाहिए 2 और ग्रे डाइस पर कितना आना चाहिए 1. देन द सम इज 3. सिमिलरली ब्लू डाइस पर कितना आना चाहिए 1 एंड ग्रे डाइस पर कितना आना चाहिए 2. Now the sum is also 3 and so on. Now complete the table. Even sum of 2 dice and probability. तो अगर sum 2 है तो probability कितनी है 1/36. But अगर sum 3 है तो probability कितनी आ जाएगी 2/36. Because possible outcome कितने हैं 2. Same as अगर sum 4 हो तो probability कितनी आएगी 3/36. Because possible outcome कितने हैं 3. Same as अगर sum 5 हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 4/36. बिकॉज पॉसिबल आउटकम कितने हैं 4. इवन सम ऑफ 2 डाइस इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम कितने हैं 5. तो प्रोबेबिलिटी इज 5/36. नाउ इवन सम ऑफ 2 डाइस इज 7. तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं 6. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 6/36. सेम एज इवन सम ऑफ 2 डाइस इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम कितने हैं 4. And the probability is 4/36. Similarly, even sum of 2 dice equal to 10, then the probability is 3/36. If even sum of 2 dice is 11, then the probability is 2/36. Even sum of 2 dice equal to 12, then the probability is 1/36. Now question number 22, solution of second part. चेक करना है क्या गिवन आर्ग्यूमेंट करेक्ट है. So the answer is probability of each of these sums will not be 1/11. As these sums are not equally likely. It means स्टूडेंट यहाँ पर जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे. अगर यहाँ पर इक्वली लाइकली इवेंट्स होते तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अदरवाइज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 22 is complete here. Probability exercise 15.1 question number 23, and the question number 23 is a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Honey wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that honey will lose the game. Solution of question number 23. According to question, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. मतलब 1 rupee coin को हमने 3 times toss किया. Noting its outcome each time. Honey wins if all the tosses give the same result. Means 3 head और 3 tails. यानी कि हनीफ तभी जीतेगा अगर कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं और तीनों बार क्या आता है हेड आता है. सो पॉसिबल आउटकम इज एच एच और एच. सेम एज कॉइन को फिर से 3 टाइम टॉस करते हैं और इस बार तीनों कॉइन्स पर टेल आता है. सो द पॉसिबल आउटकम इज टी टी टी. नाउ कॉइन को वंस अगेन 3 टाइम्स टॉस करते हैं. फर्स्ट टाइम एच, second time H and third time tail. So the possible outcome is H H T. Similarly, once again toss the coin 3 times, and this time first coin having a head, second coin having a tail, and third coin having a head. So possible outcome is H T H. Now this time first coin having a tail, second coin having a head, and third coin having a head. तो इस बार possible outcome क्या होगा? Tail, head, head. Similarly, once again throw the twice. इस बार फर्स्ट कॉइन पर कितना आया टेल, सेकंड पर आया टेल एंड थर्ड पर आया हेड. सो द पॉसिबल आउटकम इज टेल टेल हेड. नाउ वंस अगेन थ्रो द कॉइन 3 टाइम्स. नाउ दिस टाइम फर्स्ट कॉइन पर आया टेल, सेकंड पर आया हेड और थर्ड पर आया टेल.
So possible outcome is tail, head, tail. Now one more time, toss the coin. और इस बार फर्स्ट कॉइन पर आता है हेड, सेकंड पर टेल एंड थर्ड पर टेल. सो द पॉसिबल आउटकम इज हेड, टेल, टेल. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आ जाएंगे? 8. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? ओनली 2. बिकॉज कंडीशन क्या थी कि हनीफ तभी गेम विन करेगा जब 3 टाइम्स हेड आए और 3 टाइम्स टेल आए, अदरवाइज वो गेम लूज कर जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी हनी विल विन द गेम इट इज इक्वल टू 2/8 एंड सिंप्लीफाई कर दीजिए इट इज इक्वल टू 1/4. बट हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम. तो क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हनी विल विन द गेम एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4. सिंप्लीफाई कर दिया, कितना आ जाएगा? 3/4. क्वेश्चन नंबर 23 is complete here. Probability exercise 15.1 question number 24 and the question number 24 is a die is thrown twice. What is the probability that first part 5 will not come up either time, second part 5 will come up at least once? Solution of question number 24. According to question, a die is thrown twice. हमने एक डाइस को 2 बार थ्रो कर दिया. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 6 into 6 that is 36. बिकॉज डाइस में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं? 6. सो 2 टाइम्स थ्रो करने पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 36. नाउ द फर्स्ट पार्ट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. सो 5 कितने टाइम्स पॉसिबल है? हमने 2 टाइम्स डाइस को थ्रो किया है, सो इट इज 5,1. यानी कि पहली बार में 5 आया, दूसरी बार में 2 आ गया. सेम एज फर्स्ट टाइम 5, सेकेंड टाइम 3, फर्स्ट टाइम 5, सेकेंड टाइम 4, फर्स्ट टाइम 5, सेकेंड टाइम भी 5, फर्स्ट टाइम 5, सेकेंड टाइम 6, first time 1, second time 5. Same as first time 2, second time 5, first time 3, second time 5, first time 4, second time 5, first time 6 और second time 5. Hence the total number of favorable outcome कितने हो जाएंगे? 11. Now probability 5 will come up either time. It is equal to 11/36. Because 11 क्या है? Total number of possible outcome and 36 क्या है? Total number of आउटकम. नाउ हमें फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कभी भी नहीं आए. सो 1 माइनस 11/36 को सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 25/36. सो प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम इज इक्वल टू 25/36. नाउ सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करना है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस. एटलीस्ट वंस की कंडीशन में क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ केसेस व्हेन 5 केम अप एटलीस्ट वंस कितना था? 11. सो प्रोबेबिलिटी 5 विल कम एटलीस्ट वंस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड दैट इज इक्वल टू 11/36. सो क्वेश्चन नंबर 24 is complete here. Probability exercise 15.1 question number 25 and the question number 25 is which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. First part, if 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. Second part, if a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. Solution of question number 25 first part. The answer is incorrect. Why is it? Because when 2 coins are tossed, अगर हम 2 coins को टॉस करते हैं, the possible outcomes are क्या होगा? फर्स्ट कॉइन पर हेड, सेकेंड कॉइन पर हेड, फर्स्ट कॉइन पर हेड, सेकेंड कॉइन पर टेल, फर्स्ट कॉइन पर टेल, सेकेंड कॉइन पर हेड एंड फर्स्ट कॉइन पर टेल और सेकेंड कॉइन पर भी टेल. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर कैन बी वन ऑफ ईच in 2 possible ways. One of that head and tail and second is tail and head. So the probability of getting 2 tails is 1/4 and the probability of getting one of each is 1/2. It can be observed that for each outcome the probability is not 1/3. इन दोनों ही कंडीशन में probability 1/3 नहीं आ रही है. So the answer is incorrect. Solution of second part. Answer is correct. Why is it? When dice is thrown, the possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Out of these 1, 3, 5 are odd and 2, 4, 6 are even number. So total number of possible outcome for even and odd condition is equal to 3. Now probability of getting an odd number कितनी हो जाएगी? Total number of favorable outcome upon total number of possible outcome. So favorable outcome कितने हैं? 3
और पॉसिबल आउटकम कितने हैं 6, 3/6 and that is equal to 1/2. That's why this answer is correct. So question number 25 is complete here.